Hello everyone, I'm live here again with a new personality, waiting for people to join. As usual, I keep waiting for people to join. So let me just do some adjustments. So somebody joined. Thank you for joining. Thank you. Well, आज के हमारी जो गेस्ट हैं उनको मैं बहुत आदर और सम्मान देती हूँ, क्योंकि ना कि वो पूरे देश विश्व में प्रसिद्ध हैं एज अ कथक डांसर, बल्कि मेरी भी गुरु माँ है वो. सो आई एम रियली फीलिंग प्राउड टुडे. I'm really feeling happy, in fact, to be with her, in conversation with her today, and I'm glad that she accepted my invitation too. So I think ma'am is here, so just let me add her up quickly. Give me a minute. Okay, here I see the list. So she's here. आप सबका स्वागत है बहुत बहुत. I welcome everybody. So I'm waiting for her to join. Connections. Oh, they take so long. There was a decline. Okay, so let's see, she will join again back. Yes, I think she's here. So it takes time sometimes to do some adjustments. Well, she is known for her expressive aesthetic elegance, a brilliant exponent of Kathak who combines expressions, feelings, storytelling, footwork, sur, tal, leh in a structure of Kathak dance form. Yes, also making unique, vibrant waves when she combines this form of Kathak dance into another form of arts such as jazz, drums, qawwali, ghazals, ballet, and modern dance too. She is a senior disciple of Kathak maestro Guru Pandit Durga Lal Ji, Jaipur Gharana. Yeah. So, what is wrong? Why is she not able to join? She's okay. मैम आप आ जाइए, आप मुझे डांट लीजिए. नमस्ते मैम, नमस्ते. वेलकम टू माय शो. अब मैं इतनी देर से बोल रही थी आप मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, पर शो पे तो आइए. Some technical hiccups. Yes, technical issues and problems. By the way, आप आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. जहनसीब. Okay, so मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है. So can you just tune in on to that? आवाज तो हमेशा मेरे कानों में गूंजती है आपकी. खैर, आज हम चाहते हैं कि पूरा विश्व, पूरी इंडिया देखे आपको और सुने. So थोड़ा लाउड. और मुझे लगता है बाहर की आवाज ज्यादा है क्या? मेरी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है. Yeah, little. Okay, good to go. So I was just giving a brief introduction about you while you were struggling to join, and पहले तो आपके पैर छू के प्रणाम करना चाहूंगी क्योंकि आप मेरी भी गुरु हैं. और मुझे आज बहुत एक्साइटमेंट और गर्व महसूस हो रहा है that you are in front of me. रोज जिससे मैं डांट खाती हूँ, क्लासेस बंक करती हूँ. कोई विश्वास नहीं करेगा मैं डांटती भी हूँ. डांटना मतलब प्यार से.
प्यार से। और मैं क्लासेस बहुत बंक करती हूँ और मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, बट आई सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू मैम। सो well, let me start the show with hello, salam, namaste, sat sri akal, and welcome to yet another episode of What's Your Story by Madhuri. And I'm Madhuri, the host for the evening. And I welcome here with full dignity and love and affection my guru and guru of many's. In fact, a renowned exponent of Kathak art, uh, my guru, Mrs. Mangla Bhatt, ma'am. Namaste, ma'am. Welcome to the show and thanks for accepting my invitation. Thank you for inviting me first. And if you tag Guru along with my name, it will be difficult for me to, Guru is really something big thing. Yes, you are big thing for और me. उसके साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, उसके लिए मैं तैयार हूँ कि देखना है मुझे। अच्छा, आप खैर गुरु दक्षिणा की बात तो हुई थी हमसे, तो we will talk about it later. गुरु दक्षिणा डर लगता है ना मुझे। वो दक्षिण उत्तर कहाँ है देख रही हूँ मैं। Okay, so कहाँ से शुरू करूँ मैम, बताइए। Where should I start from? Your journey started as you were, I think it's 13 years old or 8 years old. Much later. Okay, so please tell me something about your childhood. Childhood, about what? About my dance, about my playing Okay, along, and so last previous episode we had a respective IS officer, Mr. Jayesh Ranjan, who told me and who gave me an idea that Madhvi, you should implement this in next of your coming episodes. Try to break the childhood into three categories, like when you are a toddler, when you are, adolescent, and when you are in the middle age. So let's start all three of them with you. so I would like to advise one more thing, that you should categorize not according to the age, but so many things like Yes. childhood friends, interests, not no, what not. ओके, चलिए ये बताइए कि आप बचपन में कैसे बच्चे थे और आपको डांस के प्रति ये जो या आपका जो भी आर्ट था उसके प्रति लगाव कैसे हुआ। मैं बहुत शांत थी, शांत बच्ची, शांत। बिल्कुल। ओके, मतलब आपने कभी बदमाशी नहीं करी स्कूल में, कभी स्कूल की क्लासेस बंक नहीं करी, कभी किसी को तंग नहीं किया, मैं मान नहीं सकती। कैसे नहीं मान सकती हूँ, मेरा बचपन है वो, मानना ही पड़ेगा। सच में मैम, आप इतने शांत थे, मतलब never used to do all those naughty stuff or girly stuff? No, not at all. Not girly at all. Because I never used to wear bindi, ये सब कुछ. I grew up along with my elder brothers, cousins. Okay. So मेरे अंदर वो बच्ची वाला कुछ भी नहीं था. मैं तो इनके साथ ही घूमती थी, इनके दोस्त थी, इनके खेल गुल्ली डंडा नहीं खेला बस. Okay. बाकी सब तो ऐसे ही था. Right. And so ये बताइए कि राघव सर के साथ what was your meet first? How did you meet sir? एकदम छलांग मान ली एकदम. अब आपने बोल दिया कि आप सीधे बच्चे हैं, तो फिर हम उसको घुमा के पूछेंगे. There is another way. Well, I'll come forward. एकदम छलांगी मार ली तुमने. एकदम छलांग मार ली, क्योंकि अभी तो सच्चाई वही है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ हाँ. शायद उससे ये पता चले कि स्कूल का कनेक्शन था, कहाँ से मिले, यू नो. कथक स्कूल का कनेक्शन है हमारा. जी. कथक इज कॉमन लैंग्वेज एंड इंस्टीट्यूट बिटवीन अस. जी. और संगीत, नृत्य, कला, ये हमारे जो बीच की कड़ी है, ये सारी चीजों से जुड़ी है. बचपन में तो मेरा प्यार संगीत में तो रुचि थी, मुझे नाटक में भी, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो वो सारा तो है, संगीत और नाटक तो साथ में चलता है. Okay. हमारे Where साथ. were you born, ma'am? Where were you born and brought up? कोल्हापुर.
कोल्हापुर से आई हूँ। ओके, तो कोल्हापुर से। फिर या और कोल्हापुर में, बट यू डिड स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली। स्कूलिंग नहीं, स्कूलिंग मेरी कोल्हापुर में हुई है। मैं कथक सीखने के लिए दिल्ली आई कॉलेज। आई थिंक उसके पीछे आपके ब्रदर का बहुत अहम रोल था। बिल्कुल, उनका ही रोल है, उनकी ही देन है मैं जो आज नृत्य में हूँ। क्योंकि वो एनएसडी में थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। ही हाँ, अब आप मुझे रात को भी बोलेंगे ना एमएसडी कहाँ है, तो मैं आपको ऐसे देख के बता दूंगी वो रहा। तो अभी तो जी। बिल्डिंग वहाँ पर है, कथक केंद्र कहीं और है। हाँ। लेकिन तो जब वो उन्होंने एनएसडी ज्वाइन किया, तब ही फाउंड आउट देयर इज वन इंस्टीट्यूट कॉल्ड कथक केंद्र, एंड हिज टीचर मेंटर प्रख्यात गायिका है रीता गांगुली जी। उन्होंने मेरे भाई किरण कुलकर्णी को उन्होंने बहुत इनकरेज किया कि why we, I mean, you have come so long, why don't you uh, bring your sister also, because he was very talented and multifaceted जो बंदा होता है वैसे थे। तो उनको लगा कि इनकी सिस्टर भी कुछ काबिलियत रखती होंगी, इसी हिसाब से मैं कथक केंद्र में आई। तो मेरे जीवन में मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, यहाँ तक मुझे कथक केंद्र तक पहुँचाने का। और कथक केंद्र की जर्नी में मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा, बहुत क्या, वो सारी सब मेरी जिंदगी में सब साथ किया ये सारे लोग। तो जी। तो when you were learning Kathak, how was the experience? Like आपको पहले जब शिक्षा फर्स्ट डे जैसे होता है, were you nervous? What kind of feeling you carried? Or was it like just in you? what was a feeling then? It was uh, it is a renowned institute, it is a national institute। ऐसी Mhm. जगह एडमिशन मिलना, और इट इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी अंडर रिनाउंड गुरुज, ये इतनी आसान और छोटी बात नहीं होती है, बिकॉज यू आर इन अ Okay. प्रोफेशनल स्कूल। सो with that, lot of things are, you are supposed and you should carry with you। it is not enough to be a student there, क्योंकि आपके कंधे पे एक जिम्मेदारी है कला की, गुरु की। और जिन्होंने Mhm. मुझे इतना सारा साथ दिया मेरी मेरी यात्रा में, तब तक जब तक मैं आई थी वहाँ, तो उनकी सारा जो विश्वास है मुझ पर, द फेथ दे हैड इन मी, इट वाज एनॉर्मस। मतलब मुझे वो सारा मेरे साथ मुझे ये करना था। इट वाज नॉट ओनली ट्रेनिंग, समझ रहे हो ना Mhm. कि जी। तो बिल्कुल नर्वसनेस था कि मैं कैसे इसको करूंगी, कैसे लेके चलूंगी इन बातों को। Mhm. So, ma'am, how important is Jaipur Gharana, Lucknowi Gharana? What is the relevance? फर्स्ट ऑफ ऑल सी, what is the relevance in what context? The Gharanas. When we call that you're from a Jaipur Gharana. Okay, so Mastro. So, what are these Gharanas and what is the relevance attached to this form of art? कला सबसे पहली है, art is most important thing, and then comes घराना is a school of thoughts, is Okay. particular। हाँ, तो उस घराने की एक परंपरा होती है जिसको वो पर्टिकुलर घराने के लोग वो फॉलो करते हैं, घराने के विद्यार्थी है, शिष्य है, वो चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ऐसे हिंदुस्तानी म्यूजिक संगीत शैली में ऐसे सारे घराने हैं, चाहे वो
इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो वोकल म्यूजिक हो, नृत्य हो, और साउथ इंडियन संगीत में भी ये परंपरा रही है हमारी, क्योंकि एक गुरु गुरु के साथ आप सानिध्य में रहते हो, तो ही हैज पर्टिकुलर वे ऑफ looking at to the art, thinking about it, and the bowl. This is the one aspect, and the technical aspect is उसके बोल अलग होते हैं, उसके करने के ढंग अलग होते हैं, और वो इंट्रिकसीज अलग होती है, उसकी एक पेश करने की तरीका होता है, लेकिन मेन जो है वो कला है। तो रिलेवेंस तो आप ढूंढते हो, राइट। और इस चीज में यात्रा करते करते आपको सिर्फ इन द सेंस कि यू हैव टू जस्ट गो ऑन, आप घराने और इन सब चीजों से बंदिश में नहीं रहते हो, वो एक परंपरा है जिसको लेके चलते हैं। अगर ये आपने कभी अपने स्कूल या कॉलेज में पूछा कि मैं कब तक कथक सीख पाऊंगी, एक क्या टेन्योर होगा, कभी आपने ये पूछने का मतलब जाहिर किया, कोशिश करी, डांट खाई उसके लिए? क्योंकि मुझे पता है मैंने खाई है। मैं तो बहुत क्या बताऊं मैं। आपको जब आप बताना पड़ेगा आज। जब आप सागर के किनारे खड़े होते तो आपको क्या लगता है कि मैं ये कब तय करूंगी? कभी लगता है? कभी पॉसिबल है? जब ये रियलाइजेशन हो ना, तब ऐसी बातें नहीं आती मन में। वाह, व्हाट अ थॉट मैम, एब्सोल्युटली। इसका मतलब डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट थॉट, एंड आई सल्यूट यू फॉर दैट। मैंने अरे डांट खाई है। नॉर्मल है, मैं तो नहीं, ये मैंने डांट खाई हुई है, सो आई नो। मैंने उसके बाद से पूछना बंद कर दिया था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बस मैं करती जा रही थी और मैं सीखती जा रही हूँ। मुझे पता है कि जो मेरे गुरु बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, फिर से पूछती हूँ मैं आपसे कि आप बचपन में मतलब कभी भी आपने छोटी छोटी गर्ली थिंग, जैसे मतलब आज ये पार्टी है, आज वो पार्टी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, यू नेवर यू व्हाट वाज द एनवायरमेंट ऑफ योर हाउस, आई मीन रादर आई मस्ट से, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता किस तरीके से आपको देखते थे उस वक्त? एक तो मुझे कहना है कि हम लोग महाराष्ट्रियन फैमिली, जो हाँ। मतलब मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, वो उसमें साहित्य, लिटरेचर, संगीत और इन सब चीजों को जोड़े हुए रहते, और सिनेमा क्लासिक सिनेमा जो सिनेमा से, बिकॉज ऑफ माई एल्डर ब्रदर ओनली, he was the best, I mean he was a big influencer in our house. So ओके। so we used to follow him a lot, क्योंकि एक दिखता है ना कि कहीं कुछ गहराई है, there is in-depth thought about something. So that kind of atmosphere we had. We never had party, this, that, nothing very very traditional, not orthodox, but traditional. ट्रेडिशनल। Hmm. So, आपके पापा, what they used to do? Mom, what she used to be? She was a housewife. Ha, she was a housewife, and my father was in revenue department. Ours was it wasn't a nuclear family; it was a joint family, and we used to live Okay. all together. We had farms, एंड वो Uh-huh. सारा एटमॉस्फेयर था कि गाय है तो घर का धान है तो ये है तो वो है, इट वाज डिफरेंट एटमॉस्फेयर ऑल टुगेदर, कि बारिश आई कि नहीं, कि इस बार फसल उगेगी कि नहीं, फिर उसके बाद ये नाटक आ रहा है तो ये सिनेमा बहुत अच्छा है, तो ये लेख अच्छा है, तो ये इनका ये ऑथर का बहुत
लिखा हुआ बहुत चीज़ किताब अभी पब्लिश हुई है वो पढ़नी है। तो जब हमारे ज़माने में बहुत पुराना नहीं है ज़माना, लेकिन लाइब्रेरीज हुआ करती थी। So I used to go to the libraries and no, it was a different atmosphere altogether. What's your qualification if I come to that point? I mean, apart And from academic qualification is BCom honors. कॉमर्स become की honest. स्टूडेंट हूँ मैं। उसके बाद मैं लॉ Oh, करने वाली थी अगर मैं कथक केंद्र नहीं जाती तो। okay. So you wanted to become a lawyer, that means. हाँ, लॉ या सीए ऐसे कुछ था। Since I was in commerce, so I thought CA would be the good option, and I was very good in arguments, so I thought can be a lawyer. Then, then Okay. I'm not after that. Okay. So you then okay, I think sir is watching the show. Who is? Oh, I mean, sir oh, must be watching the show. I don't know whether he has joined. Okay. Coming back to your married life. Sir is belonging to already a family जहाँ पे नृत्य और कला का बहुत महत्व रखते हैं. तो आपको कैसा लगता था जब आपने शादी करी? आप मतलब कैसे मिले एंड वो कनेक्शन कैसे हुआ? Of course, it is Kathak Kendra. हाँ We were both were in Kathak Kendra. He was under Maharaji, I was under Guru Pandit Durgalalji, and जी but it hardly mattered to us कि हम लोग दोस्त है या क्या है कैसे, because we already knew that we have come with some not aim, but there is some perspective, there is some thought behind when I took admission there, and he was always in dance, so he also यस came with some uh, there was some focus, ओके and then gurus never, I mean, my guruji was totally different, and in our case his guruji also was different. I mean, they यस favored our friendship, but generally ऐसे होता है कि when you come with some objective, some ambition, and then you defocus yourself, then उनका जो मेहनत है उनकी, वो वो सही चैनलाइज नहीं होती है। फिर दे रियली दे डोंट डिस्करेज बट दे डोंट एनकरेज ऑल्सो फॉर सच थिंग्स, क्योंकि अगर आप ये सब करते हो तो आपकी काम के लिए कम वक्त है आपके पास। सो और साधना ये कुछ अलग है, वो इन सब चीजों से डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। क्या है साधना? आई वुड लाइक टू नो किस तरीके से आप उसको देखते हैं? जो साधते हैं उसको साधना कहते हैं। साधना क्या है? किसी एक चीज पे काम करना है, वो कोई भी चीज हो, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, कोई आर्ट हो, कोई स्किल हो जिसको आप, ये स्किल बेस्ड है सारा। एक्वायर करना चाहते हो? हाँ, you need to work on it continuously, and when you get that kind of a hard work, then you are attached. It is not, you cannot categorize it, because along the way you are involved in that, you you are attached, you are emotional, you have some relationship with that art, and राइट that makes, that gives another dimension and dynamics change, that that particular thing, no.
सो आप जब, मैं हमेशा क्लास में भी कहती हूँ, अगर आप किसी के पास नहीं जाओगे तो वो चीज आपके पास क्यों आएगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्ट, इफ यू डोंट गिव enough time and uh, Dedication or dedication, hard work, thoughtfulness, everything, it is why that thing will come to you. It is very absolutely. in-depth subject. तो साधना क्या है, जब साधने लगते हो तो उसमें समझ आती है। और ऐसे नहीं होता है कि आप घुंघरू बांध के, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कथक के स्कूल को बिलोंग करती हूँ, तो आई एम टॉकिंग, ऐसे नहीं होता है कि आप यू कीप practicing and practicing. Yes, there is some time कि you have to practice and practice. उसके बाद से वो खुलने लगती है कोई कोई बातें ना, क्योंकि आप इसके साथ रहते हो तो आप, you are involved, your thoughts are involved in that particular thing, you are not somewhere else. तो वो बातें अपने आप से खुलने लगती है चीजें, तो आप फिर उसमें आप अंदर जाते हो, कोशिश करते हो। टेक्निक तो होना ही है, लेकिन ऐसे होता नहीं है कि है नहीं कि आप 24 घंटे में से 12 घंटे आप सिर्फ टेक्निक का काम कर रहे हैं। नहीं, आप उसके ऊपर विचार भी करना है, आपको उसके साथ का साहित्य भी पढ़ना है, आपने बातचीत भी करनी है, लोगों से मिलना भी है, स्कॉलर्स से मिलना है, आर्टिस्ट से मिलना है, ये करना है, वो करना, बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें इन्वॉल्व होती। So आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस एज अ स्टेज परफॉर्मर कब दिया था मैम, एंड वेयर वाज इट? It was in Shriram Center in New Delhi. It was my ओके. third year, final year performance test होता है उसमें. Other than your viva, theory and all, you have a performance test. There I performed first time, Kathak, in front of all renowned gurus. Were you nervous? Obvious है. जब आप अपने अंदर जब मालूम चलता, नर्वसनेस का क्या होता है, वो नर्वसनेस अलग होती है जो आपको कॉन्स्टेंटली, यू नो दैट देयर इज सो मच रूम टू डू एंड आई डिड लिटिल, वो जो गैप होता है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। Yeah, your butterfly nervousness is always good. You know, it is good. Nervous होना अच्छा है. That is all through. That is with me. I think it is with many artists that when it should be there before you go to the stage, go on the Yes. stage. That will be there. अच्छा, स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हुए कभी ऐसा, मतलब फर्स्ट टाइम जो आपने किया हो तो ऐसा लगा है ओ माय गॉड ये भूल गई या ये छूट गया, ये करना था? नहीं, अपनी मेरी कुछ कमियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है ना, वो तो होता ही है। हाँ. वो कोई चीज हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ था कि मैं अरे भूल गई, कुछ नहीं। और सबसे पहले आके आपको किससे कहा था कि इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस? मुझे उतना कुछ याद नहीं है भाई, क्योंकि मैं ऐसी तारीफें सुनती ही नहीं हूँ, कम सुनती हूँ। ओह, ओके. मैं बोल देती हूँ, इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस. अच्छा, तो आई मीन आप सुनते ही नहीं है, जस्ट इग्नोर मार देते हैं. ओह या यू हैबिचुअल, दैट्स ओके. इग्नोर सी, मेरे गुरुजी कहते हैं कि तारीफ ऐसी एक चीज है जो आपको उस चीज से हटाती है, और उन्होंने प्रूफ कर दिया, और मैंने क्लास में भी बोली है चीज कि हम तारीफ कैसे करने प्रूव किया? मुझे बताइए, मुझे बताइए. आई मीन क्या उन्होंने कुछ ऐसा? नो, व्हेन वी वर, हमारी क्लास चल रही थी, एक बार हम लोग ठेके पे तिहाई कर रहे थे, और तिहाई की हाँ. और बहुत थोड़ी इंट्रिकेट थी, और हमारी सम पे आ गई थी। उन्होंने कहा क्या बात है, गुरु जी का ऐसा कहना, क्या बात है, ये तो मतलब हाँ, क्या आई है नो. क्या। जब आप मुझे बोलते हैं कि एक बार भी मुझे पूछना पड़ता है, कि एक बार पूछना पड़ता है, अच्छा मैम ये ठीक है कि नहीं है, ठीक है,
तुम करो ना, यू नेवर से, एंड आई नो, ओके ठीक है, नहीं लेकिन होगा अच्छा। मैं जब मेरे गुरुजी की बात कर रही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, मैं वो नहीं, लेकिन वो उनकी बात मैं कह रही हूँ। और उन्होंने कहा था कि अगली बार, अब उन्होंने तारीफ किया, और तो वो जो एक पिन पॉइंटेडनेस लेता है वो उससे हट जाता है। एंड हम्म। and he didn't tell us all these things. We just absorbed everything from him. I i i was a sponge. हम्म। मैं तो एब्जॉर्ब करती थी उनकी बातें। तो वो बातें ऐसी है कि वो आ, सारी, जैसे जब कहते हो कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग होता है, वो सिर्फ बोलों का, बंदिशों का, तालों का, कॉम्पोजिशंस का नहीं होता है। तो ट्रेनिंग होता है ये, इट इज अ होलसम थिंग, इट इज ऑल टुगेदर। तो जब आप एक स्टूडेंट की, विद्यार्थी, शिष्य, इस तरह से एक गुरु के पास होंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आती हैं। जी। एंड how important is in Kathak the mudraएं, the lay, tal, the bhav, and storytelling? What role? You have only have told everything, what is mudra, अच्छा, what is मैंने खुद ही tal, बोल दिया। uh, is it, what is the relevance, क्या, कैसे, यही तो है। अगर ये एक भाषा है ना, जी। अब हाउ इम्पोर्टेंट इज ग्रामर, अल्फाबेट्स, प्रोज, फुल स्टॉप, कॉमा, essay, Conjunction, interjunctions. poem, Yeah. poetry, no, short essays, no, मतलब it's a language. So all things are important. अगर मुद्राएं हैं, मुद्राएं क्योंकि हमारी बात नहीं होती, राइट? जी। So we are, those are our alphabets. So Okay. and then through that we talk to the audience. So mudras are important. सिर्फ मुद्रा होना जरूरी नहीं है, मतलब इट इज नॉट इनफ। आपको Enough. भाव चाहिए, भाव चाहिए, right? Yeah. एक्सप्रेशन चाहिए। एंड संगीत तो उसका आत्मा है। संगीत And चाहिए तो हम eyes play a very important role. या, यस, यू आर राइट। And not only eyes, because eyes are, it's a reflection of what you think. So you have to uh, feel those things. That Yeah. reflects, no? If you are thinking and feeling, then only it reflects in your eyes. What is the other way? Yes. 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 That's Words, important. words don't convey anything. You convey No. words. I mean, Right. it is your interpretation. That is what I am to say. Yes. So now coming back to you are also a director at Akriti, founder and director jointly with Sir at Akriti Kala Kendra in Hyderabad. Akriti So Kendra. yes. So how did you plan to just start this? I mean, what was your inspiration behind it? So when we came here after finishing our um, training in Kathak Kendra, then we Right. traveled, then we stayed for a while in Delhi, and then since Raghavji belongs to Hyderabad, Andhra Pradesh, then Andhra Pradesh, now Telangana. Yeah. So we came here. He had long this thing. His father is renowned artist, Right. folk and travel artist. He was here, Dr. Gopal Rajput. So he wanted to
take forward that lineage, and as well as Kathak, because we together thought that uh, this is the right time and good decision to move out of Delhi and establish, decentralize ourselves, decentralize art, because Delhi is hub. Nobody wants to live Delhi. I also. Mm. So, but then we realized, yes, there is a lot of this thing, scope we can do, and there is need, and it's a southern part of India, and there is a lot of interest in people also. So So established. Mhm. why not going to Mumbai? Why will I go to Why Mumbai? why were you not so interested in the Bollywood so-called, where everybody wants to make the name and fame both? You are asking a doctor that why didn't you do engineering? Oh, is it My so? my path was late then only when I took admission in Kathak Kendra, and learning from great guru uh, is it's an honor. And after that, when you realize that yes, it is a part of interest also, no, Madhavi. Ji. Few people are interested in some kind of art. Few people are interested in some other kind of art. So Bollywood not was and is not my interest. But you were getting some offers or not? I just want to When know. I was in Delhi, I was getting offers. Okay. Then there was a big boom of parallel cinema. So there was few things came in my way, Hmm. but everything was decided before only. Destiny. Yes. And you're also a director and a host of Antarang, a musical festival which happens every year in Hyderabad. Music and dance and music festival. Yes. So could you please throw some light on that? Uh-huh. So, see, at our institute, um, we do not have, uh, since we don't believe in examination system, Hmm. uh, we don't have such levels. But since we are, this Kathak dance is a performing art, and you learn through performances. It is not only a classroom art or classroom training. Hmm. You learn through performances, and uh, the confidence you get going onto the stage, interacting with the audience, talking to the people, and I mean, going on the stage itself needs a lot of courage. तो हमने ये सोचा कि हमको हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है where they can come together, dance together, interact, learn, and that will give lot of learning to them. You सिर्फ क्लासरूम से या एग्जामिनेशन देने से you you learn you learn. It is Yeah, not you get to know that you know it or you don't know it. But at the किसी same पे time. निपुण होना किसी चीज में that is level of again performance and confidence both. At the same time, you remember when you once you perform, you know that what do you need to do, how much you have to do. उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस का भी तो ये आता है, एंड यू इंटरेक्ट विथ, आपको मालूम चलता है कि अगले बंदे से स्पेस का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे डांस में, लाइंस का कितना, डिजाइन का कितना इम्पोर्टेंस है. आई मीन सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन वन परफॉर्मेंस.
Music. you are constantly getting that awareness if you are into that moment. तो आपको Yes. ये सब होता है, मतलब that is a part of your training. तो हमने ऐसे सोचा है कि तो इस हिसाब से अंतरंग शुरू हो गया था. फिर अंतरंग is a big festival. Now we have included, I mean, since few years, it is music is included, and we are inviting other artists from. Then we realized कि सिर्फ एक ही dimension हमारी thought process से they are getting coming. I mean, and they know us only. So we thought, why not invite other artists? They are serving this art since many years, all senior artists. तो हम उनको invite करते हैं to perform. Mhm. So So it's around the Hyderabad world. audience, uh, what I mean, उनके लिए एक ये उपलब्धि होती Right. है. So it's not only in Hyderabad now. You have people participating or participants from all over the world, right? I have some international students also. They learn from me. They learn from you. So how good or rather interesting part this pandemic time has played in the regular classes where we used to go. Now it's on online. So could you please just tell us something about it? Your experience of online teaching Kathak. I was teaching Kathak over Skype before for my Okay. students who are not in, they are not, they don't stay in Hyderabad. For me, maybe it wasn't, but yes, uh, सबको मैं दिन में मिलने वाली एकदम से स्क्रीन पे मिलने लगी तो इट वाज वेरी इट वाज वेरी sometimes funny, sometimes exciting, Exciting. and Yeah. and other thing is, uh, you get to know so many things about your own student. Kaise? I mean, you don't come to know in physical moment, but you come to know online. Because screen itna, it's too close. I can see Okay. these things. क्लास में चुरा ये the other thing is, there is a lot of challenge because there is difference in of fraction of second. So that training, you have to understand when the that sound और नगमा जो चलाते हैं उसका जी हाँ. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड देर से पहुंचते हैं या मुझ तक या मेरे There's a स्टूडेंट. lag. There must be a lag वो तो because of. मतलब वो रहेगा क्योंकि साउंड विल ऑलवेज लैग बिहाइंड ना, थोड़ा सा कन्वे होने में टाइम पे. सो दोज चैलेंजेस आर देयर कि सम जो हमारा इतना इम्पोर्टेंट है तो जी. उसको हम किस तरह से समझे, ये है. But I think it's a interesting experience, no? I mean, आई थिंक apart from. इट्स इंटरेस्टिंग. Yeah. You know, I feel so because this wasn't there before. Nobody thought of these things. No, not at And all. लेकिन हम लोग और it gave me lot of relief also because I could see my students, I could interact with them. So मुझे इन दिनों जिनको भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ होगा या लोनलीनेस हुआ होगा या कुछ, Unfortunately नहीं, बहुत लोगों को हुआ है. हाँ तो I with God's grace and Guruji's blessings मुझे ऐसा कुछ नहीं, because I was constantly interacting with my you people, it makes lot of difference. It is not I did not feel कि अरे क्या है. I was reading also, मतलब lot of things, I could pursue during this because as it is I am not very outgoing कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये वो करना है. मुझे I am happy with myself.
Yes, that पढ़ना I अच्छा have. लगता है। You love to read, ma'am. रीड। So you write also sometimes. You sing. कुछ कविताएं लिखती हूँ कभी कभी। आप गाना भी गाते हो? हाँ, हमारा तो यस, गाना गाती हूँ मैंने कैसे, मेरी मेरी कॉम्पोजिशन से गाती हूँ मैं। हाँ, so कुछ संगीत हमें. संगीत का जो मेरा रिश्ता है वो बहुत ही बहुत गहरा है संगीत से मेरा। अ, जो क्या कहूँ मैं, एक बार और ताल्लुक या व्हेन आई वाज whatever. इन दिल्ली, सो हमारी क्लासेस जो है दो दो तीन बजे तक होती थी। उसके बाद लंच के बाद हम मंडी हाउस पे ऐसी है कि वो इट इज़ अ आर्ट हब, वहाँ लॉट ऑफ ऑडिटोरियम्स आर देयर। और विंटर में तो हर दिन फेस्टिवल्स का मतलब कोई ना कोई आर्टिस्ट, renowned artist, maestros, uh, are they used to perform. I mean, festivals are organized by the Yes. organizations and Mhm. this and so. I had lot of opportunity to attend those festivals और मैंने Okay. इतना सुना है। तो एक बार कुमार जी गा रहे थे और मैं ऑडिटोरियम में पहुंची और सिर्फ मेरी आंख से आंसू गिर रहे थे। कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं होता। वो कौन सी तार ये हो गई थी, झनक गई थी छिड़ कि वो गई थी. छेड़ गई थी, छिड़ गई थी कि कुछ हाँ. भी नहीं था। नथिंग। आई वाज ऐसे आई वाज थिंकिंग कि क्या हुआ। Are वो you very emotional person? स्वर इतनी उसमें काबिलियत है संगीत में। मैं मुझे तो मेरा संगीत के साथ बहुत लगाव अलग तरीके का है। So आप हमें कुछ गा के सुनाएंगे? अरे नहीं रे, मैं तुमको क्लास में गा के सुनाऊंगी जितना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म पे मुझे मुझे मालूम है कि मैं कितना कितने पानी हूँ। मुझे गाना वाना नहीं है, मुझे सिर्फ बात करनी है। Okay. So, right. I just want to know that आपने ICCR, that is Indian Council for Cultural Relations, and Indian Government Department headed by an senior IS officer, उनके साथ भी you have, worked. I mean, उनके साथ आपने बहुत काम किया. You have just share some experience regarding it. How was it working with him? See, ICCR, Indian Council for Cultural Relations, is a organization, uh, and they have lot of um, collaborations with and Indian centers abroad, and Okay. the activity is very large and vast. And there are many occasions that ICCR has sponsored us and me individually also to perform outside India in different festivals. Just I have been to many countries for that matter, Mm-hmm. and I was a teacher and performer in Tashkent, Uzbekistan for 3 years. So ICCR played a major role, and Yes. uh, yeah, and it gave a lot of opportunities. Right. And so when it comes to, like, you go outside performances, abroad, internationally performing, who does your makeup? Who looks after your costume designing? सब खुद करते हैं। Who does? We only do. Was it taught to you in during your learning That's process? not Or, totally right. It's a wholesome. You don't. It is not. See, those things are somebody is designing your costume, and these things are came much later, much huh. later, and Hmm. you are totally independent. You design your costume. Maybe few friends मिलके हम decide करते थे कि Mhm. क्या कलर, मतलब when I was in Delhi and a student, तो हमको क्या कहाँ से मटेरियल लेना क्या करना है वो सब लेकिन खुद करते हैं। और
आंखें तो खुली रहती है ना, देखते हैं क्या होता है, क्या अपने को अच्छा लगता है। Okay. तो जो ग्लैमर से थोड़ा मैं दूर हूँ। So वो थोड़ा सा है, मतलब it said I never say that this is right and this is wrong. Nothing is wrong, nothing is right, because you just No, what have do to you mean by travel. what do you mean by ग्लैमर से दूर हो? नृत्य और कला ग्लैमर से कभी दूर हो ही नहीं सकती. Oh, It's that just is your like, outlook. That is your outlook. मेरे लिए वो no, बात I नहीं mean, है. huh? It is soulful. For me, it is a Yeah, soulful it act. is soulful, of course. In fact, this raises another question in my mind कि आज हम बॉलीवुड में डांस को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, जैज और ये सब, एंड हिप हॉप स्टाइल इज वेरी मच इन, एंड देन यू काइंड ऑफ हैव सो मेनी स्टाइल्स कमिंग अप, बॉलीवुड फ्री स्टाइल, where I've also learned from Saroj Khanji, my late guru. So आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या वो डांसेस अच्छे नहीं है, इट्स जस्ट अ ग्लैमर काइंड ऑफ अ थिंग, क्या उनमें कोई डेप्थ नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो बिल्कुल फिर नहीं है. आपने ग्लैमर को और कथक को अलग क्यों कहा? मैंने ये कहा मेरी जर्नी इनवर्ड है, आउटवर्ड से ज्यादा. मैंने ये कहा हाँ. ग्लैमर इज अराउंड यू. Glamour doesn't यस. stay inside you. यस. Understand? So there is difference between two. हम्म. Glamour you carry, and एब्सोल्युटली. you when you are traveling, you travel inside you. When it is soulful, when you are searching for something inside within you. तो ये जर्नीज ऐसे नहीं है कि सेपरेट होती है, अलग होती है, ये है वो है, ऐसे नहीं. वो होते होते होता है. तो एक बात वो है. और बॉलीवुड हो, हिंदी फिल्म म्यूजिक या हिंदी फिल्मी डांस, फिल्म का डांस जिसको कहते हैं, मेहनत सब में है, जीना सब में है, सब ने है. सबकी अपनी यात्रा है. मैं इन सब चीजों को बहुत अलग ढंग से लेती हूँ. आपने पिकअप करना है कि आपको क्या चाहिए. वो अवेयरनेस हो तो इनफ है. राइट. दैट इज इनफ. Do you still feel that Kathak is still not have? I mean, of course, it's been a known form of dance, but when it comes to so-called, uh, a very stylish or Bollywood types, it's still not gained that much of evident eye. Kathak is most popular dance form in the world. Indian classical dance form in the world. And you ask me the reason. It's rhythmic. It's instantly connect to the people is very strong. It is uh, it is charismatic. ऐसे है नहीं कि still didn't get it is recognized. कितने हमारे गुरुओं ने कब से ट्रैवल किया है, बाहर लेके गए हैं डांस फॉर्म, कितना काम किया है. और बाकी सब चैलेंजेस आते रहते हैं. And you were conferred with the prestigious Telangana State Award by our Honorable CM, Mr. K. Chandrasekhar Rao ji. What वो तो was the feeling? Yeah, sir, and you. So, how was the feeling at that point of time? we liked it, we cherished. uh, How did you कहते celebrate, so-called? हैं, Of course, you have been having so many awards into your pockets. Well, I know that. And in fact, another question raises that which is the favorite one and which is one which is pending in your list? क्या अवार्ड.
I'm telling you all about my soulful journey. You ask me outer questions. Yes, we like. It is a recognition. It is a, you feel that somebody is acknowledging your efforts. Yes. That gives you a lot of encouragement. Definitely, it's the feeling is very good that your state is recognizing you. Nice. Yes. अच्छा लगता And है. अच्छा अब लगता कौन है. से forthcoming कौन से है? I don't dream all this. ये वही मैं पूछना चाहती कि कोई forthcoming ऐसा कुछ ड्रीम है, कौन सा है वो? Well, you have been conferred with many awards and sir also parallelly. तो you know, अच्छा कभी ऐसा आप लोगों ने साथ में performances दिए हैं, right? I know very well. So which one is your best performance up till now with sir Together. together? हमने एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वी ट्रैवल थ्रू एशिया एंड देन आई Okay. थिंक we were in Myanmar and we Mm-hmm. always both of us we always like to collaborate and interact with the artist over there in whatever countries we have traveled we have we have collaborations with the artist. He is also very interested and I am also. So we there was big ensemble there, and we collaborated with that ensemble. There were a lot of percussions, string instruments also, and it was a big, huge auditorium. And we both of us performed. It is a memorable performance. I liked it because it was very instant. Or it was Okay. lively, you know, क्योंकि we don't have so much time to rehearse and all. Yes, and the audiences also play a very vital role, right? Yeah, In correct. encouraging the kind of performance what you have. Because if there's an eye contact, there's everything is in front of you, whatever it is there. Correct. Uh, no, ma'am, tell me Hindi song. Sorry, Hindi song ma'am नहीं गाती हैं. Please tell ma'am Hindi some मतलब Hindi some Hindi song or Hindi some? I'm not able to understand. Please specify. I'm not able to understand. Okay. मैम आपके शिष्यों में से कौन सा फेवरेट शिष्य है? मैंने अपने गुरुजी से एक चीज सीखी है. वही मेथोडोलॉजी पूछनी आज. मेरे हाँ इसी तरीके से बाहर आएगी वो आज. मेरे गुरु जी की जो बातें हैं ना कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे वो किसी के बीच में. Everyone was dear to him. Everyone was, he used to admire and encourage students. His own, ना. तो गुरुजी ने ऐसा ये सीख कभी नहीं बताई कि ये ऐसा है वो ऐसा है, ये पास का है ये करीब का है ये दूर का है ये वो है, कभी भी नहीं. और मुझे वो सबसे अच्छी मैंने वो ढाली है मेरी. वैसे भी मैं जिस तरह से बैकग्राउंड से आती हूँ उसमें ये उन लोगों मतलब मेरे घर परिवार का भी इस तरह का नहीं था. और ऊपर से गुरुजी की सीख ऐसी है कि ऐसे होता नहीं है कि फेवरेट कुछ होता है. सब मेरे पास इतनी सुंदर भावना से आते हैं तो मैं कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकती हूँ. सबको सीखना ही है ना. राइट. जी और हाँ, वो सब. मेरे पास आते हुए होता है सभी का सोच सभी की सोच यही होती है कि सीखना है. तो ये नहीं हो सकता ऐसे. और अगर मैं ये बोलूं कि you have a very talented son या and I am graduate. So what is he doing right now? We would like to know. he has his uh, own way of I mean he is a learner.
basically. And he's learning tabla now. He has picked up sitar also, and he has his own uh, company called Indie Gharana, Okay. where yeah, he's working with viewers and Wow. we Indian, basically in anything and everything about India and about hand handicraft. Handicraft means handicraft, whether it is music, it is a dance, fabric, craft, Yes. talent. So he's in that process. Okay. So does he He has his organize, own does he company. organize any kind of exhibitions, for common people to have a look about like weaving, like, weavers and encourage them? His approach to this art, he calls it art, and I also call it art, is different. Mhm. It is not exhibition based, but it is more of awareness based and awareness about everything, Uh-huh. about our own, जिसको कहते हैं परंपरा, tradition, जी. and to safeguard it, to preserve it, and to promote it. It should come across with the young generation. It should not be with the previous generation, and it should not stale also. वैसे होता नहीं है, परंपरा तो चलती है, लेकिन किसी ना किसी की ये जिम्मेदारी होती है कि किसको आगे लेके चले, किसको इसको फॉरवर्ड लेके हाँ जाएं. हाँ. And that he basically wasn't into this, but he also has you know through along with his journey he has discovered his own way of doing things. So he's in Hyderabad He's based. in yeah. So In only Lighra, one son. Only huh? one son. Only one son. Yeah. Never thought of a daughter? I have so many daughters. Oh, well, yes, you have so many, but I wish you would have one. Would have been beautiful as you are. Thank you so much for the compliment. But I have Kathak and I have Madhav, my son. So वो दो है ना, साथ साथ चलते हैं. Bilkul. And you have many other daughters, as rightly you said. One of them is me. Ca- Okay, so let me know more about you, ma'am, in a quick, short, just some questions about yourself. Yes, yes. So, what's your favorite color? It changes with the season, with the mood. Seasons? बेज, हाँ, क्योंकि मूडी हूँ ना मैं, तो Oh, oh, बेज, oh, 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 बेज, oh. मरून, मुझ मस्टर्ड येलो, ब्लू, सी ब्लू, पिकॉक ब्लू, सम शेड्स ऑफ ग्रीन. क्या क्या नहीं है, कितनी सुंदर है दुनिया. मुझे ऐसे लगता है कौन सा कलर छोड़े. पर एक तो फेवरेट कलर होता है हम सबका, कोई ना कोई तो होता है एक, लाइक एक, मेरा वैसे it catches eye, you know that color catches always eye, or you are rather always attracted toward it. Is it orange? Is it red? Is it blue? अच्छा, तो Yeah, yeah. So is it orange? Is it red? Is it blue? Something catches your I eye. know what I don't like. Because I my feeling is I don't carry it. I don't like sky blue because I know that I can't carry it. And pink, baby pink. No. Really? Uh, and all-time favorites are mustard, yellow, maroon, But beige. you do look so fabulous in your maroon or red outfit and anarkali angarkha style. I just That love is it on you. that is what I'm saying. But it changes. और मुझे कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं. मैं मेरे स्टूडेंट को भी बोलती हूँ कि तुम लोग अलग अलग पहनो ना. इट इज सो इंस्पायरिंग टू कैरी ब्यूटीफुल कलर्स व्हेन यू आर डांसिंग. तो अभी मतलब वो तो लंबा सफर है मेरा. मेरे स्टूडेंट्स के साथ के लिए एक और सेशन रखो.
Right. Right. Now, when is your birthday? 14th अप्रैल. फट से बोल देती हूँ, जो है वो सामने सामने बोल देती हूँ. ठीक है, तो 20th April मेरा होता है, so we'll celebrate together this time. Yes, we'll celebrate together. Okay. And one, you like perfumes? A lot. Perfume is my next passion. And Another, which is your best fragrance up till now? again it changes. Anna is very much favorite, and Chanel is, I mean lot. अगेन वो मेरा उस दिन का मूड होता है, कौन सा परफ्यूम मैं ऐसे खोल के देखती हूँ, हाँ ये ऐसे होना है, मतलब वो अनदर लेवल है मेरे लिए तो. Wow. Okay. So, one thing that you feel strong about your features. Any one feature which you feel is very, very, फिजिकल. yes, on your face. People say that, they say that my eyes are expressive, or I they want are, to know from you, right from your heart. आपको क्या लगता है? हाँ आई से होगा, आई से होंगे शायद. हाँ यस, For आईज. me, for me, it's eyes and hair, both. You have beautiful hair. ओके. थैंक यू, Okay. थैंक यू, थैंक यू फॉर द Oh, कॉम्प्लीमेंट. thank you. Thank you. My pleasure. My pleasure. Which is one book that you love all time reading? Your all-time favorite book? आई लाइक फिलोसॉफिकल बुक्स, Okay. मराठी लिटरेचर. ऑल टाइम फेवरेट, मैं तो अभी ऑटोबायोग्राफीज आई लाइक. जस्ट नाउ आई Mm-hmm. कंप्लीट नवाजुद्दीन की, और द Autobiography. मैन, और आई हैव Okay. गॉट वन, it is Zubin Mehtaji's biography, and few other books are there I have got in this time. This when the lockdown was open, and Yeah. I went to a shop and got few books. Okay. One great activity that you have really learned during this pandemic time or the lockdown time. What art? Extracurricular activity that you have, a skill that you have really acquired apart from what you knew. I started mandala art, doing mandala art. Yeah, actually, I wanted to ask. That's a very important question you brought into my mind. What is that mandala art? I mean, I saw it on your Instagram. It has pretty images. They're all in मैंने बहुत different. recently शुरू किया, just few weeks back I have What is started. it? Could you please tell us? I mean, I do not study. I just draw whatever it is in on my mind. I just draw. That's it. I have not also, studied. it's a art. It's a form of art. Yeah, You हम लोगों just ने we as few of my students, we they it is a group called Kathak Sahelis. We are all Sahelis. मैं हमेशा बोलती मैं सहेली हूँ. तो वो हम लोगों ने बैठ के from कुछ your college group or the. आकृति is you people only. Acha. Okay, we the people. Okay. We the people, yes. So we meet on some Wednesdays to do some activity other than Kathak. Mhm. So we Wow. all of us wanted to explore ourselves other than dance in few other things like culinary, art, or soap making, something. So Do we you cook started. at home? Yes, definitely, बिल्कुल करती हूँ. And what's your favorite cuisine? राजमा चावल. Oh my God, you love Punjabi food. Oh God, how many languages do you know? I mean, how many languages are you fluent in speaking? Fluent तो I see if there is I have I think this talent to pick up language wherever I Hmm. go. Hmm. So generally because when I I went have to to learn that talent from you now. pick up ऐसे learning थोड़ी होता है, वो इन होता है अंदर, ऐसे कुछ नहीं, nothing great in that.
So because I was in Delhi, Punjabi and Bengali, lot of Bengali friends are there. So I know. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? हाँ, आंधी है, कट आंधी है, आंधी है। ਉਹ तो ਘੱਟ बोलो, ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ आंधी ਬੋਲੋਗੇ। है, समझ आंधी है, कटो कट समझ आंधी है। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। देना बोलो। Here and there, because I was Okay. in Russia, so Russian language सीखी है। Oh really? Amazing. And Marathi of course you must be knowing about. Correct. What do you what is the first thing when you get up in the morning and you do? Madhvi, Oh, do we have how long is the session? Because this battery is going down. Is it all right or the? okay, fine. Just more 5 minutes to go. We'll finish it ठीक fast now. है, it will be good. So what is the first thing when you get up in the morning and do? Deep breathing. Okay, so that's called a form of meditation. Deep breathing, breathe in, and don't breathe out. Breathing, not breathe in. Okay, deep breathe. Okay, okay. Oh, I thought you were practicing yoga, meditation yoga. Well, it We do. says I do inhale, that. inhale, inhale, and don't exhale. No. Nobody will say that. Which yoga class is I that? said that. I said that. Okay. Next is coffee or chai. I know the answer. Again, I मैं switch बोलूंगी over. नहीं. हाँ? चाय तो लेकिन थोड़े थोड़े few months I had only coffee. So Black I coffee? huh? Black coffee? Black coffee I like. Okay. One form of fitness regime you love Yoga. to. Yoga. Fitness, of course, yoga I don't take only physically. It is not asanas. Mhm. Yoga is different for me. Walking is yes, I love to, Okay. and yoga both. Okay. Um, what's your favorite brand for your lip color? Once it used to be Christian Dior, and then Revlon. You mean to say lipstick? Lip Yeah, color? yeah. Yes. Then it was Revlon, and now I should write like the color because there are lots of brands in the market now. It is not like before. Whenever I Yes. used to travel abroad, I used to buy all these things because it wasn't available Available there. in India. Yeah. Yeah. Now it is there, so it hardly matters because once you go to mall, you have at least 20 brands, so Okay. you have to So, choose. okay. So I'll be just little quick because as you said, the battery is draining. One thing that makes you really angry. Dishonesty, And when you are at home, what kind of person you are? quiet, When do you get excited? On what occasions do you get excited? when I look at nature, I'm excited, I'm happy. When I look to at the good artwork, colors, fragrance, Your best friend? my excitement is happiness actually. Okay. Your best friend? My son. Oh my God, so sweet. Okay. One thing you don't like about, your son, and you want him to improve. He's too honest. It is Right. not disliking, but No, maybe yeah. He should not. learn another way of it also. But It's man, it's nice. Okay. An outfit on a casual day which you would love to wear any day. capri and t-shirt.
Seriously? Of course. Why not? Oh, I thought it was always suits and suits. Are I have I to mean, tell you, salwar suit. it is when you always see me in Kathak class, no? So Yeah. it is Indian dress. Mhm. Indian dress, that too, whatever, salwar kameez, Yeah, churidar. salwar suit or whatever. Huh. So if you see me outside Kathak class, then you will see all wearing, I mean, I do wear all other outfits also. Oh my God, I never knew about. Casual and comfortable, so I like it. So capris and t-shirt, right? So it's gold, silver, or diamond. Silver. I think I finished this round, and I'm contented that I have known a little bit more about you apart from the class. So I think it was a good talk, ma'am, but it was not enough, and I know you have to rush, but we'll continue in another session for sure and make one more session for this. So one message that before we, end the show for the day, you want to give to all those people who are watching, all those Kathak lovers, and all those students like me, and to everybody. See, I'm not a great person to give messages. First of all, I totally You don't believe. have to be great to give Okay, message, no, just straight from your heart. I feel that uh, everyone should believe in oneself, whatever you are doing, and that gives you strength. And strength is most important. Strength, I mean to say that inner strength to face, to to be there. Just that's it. Or I'm also trying to live in the moment. I try to, sometimes I'm successful, sometimes I'm not. But living in that particular moment is most important. और हम सभी को ट्रेन करना है अपने आप को, including me. मैं कुछ अलग नहीं हूँ. That is what I tell in the class also. That incidentally I am on the other side. Otherwise I am like you people only. I mean, I'm also learner, and everybody is learner, I think, for that matter. Yes. So it is And one be message for humble. me, Be humble. That's a great quality. and one message for me. And humble, not to only to others, but to yourself also. Yeah, that is more Sometimes important. we are very harsh with ourselves, so वो भी नहीं करना है. Yeah. Well, one message for me before the phone gets off. I will tell you. तुम्हारे कान में बताऊंगी मैं मैसेज. नहीं मुझे पता है बी रेगुलर इन द क्लास गर्ल ओके देखो फिर मुझे क्या कहना है. You are already aware of the things. मुझे I'm aware of it. I'm aware of it. I'm very well aware of it कि हाँ I was missing. I'm admitting I missed the class and डांट भी मैं पड़ती है फिर मुझे अच्छा लगता है. एंड मैं मेरा आपको बहुत तंग करती हूँ. मैं आपको बहुत तंग करती हूँ क्लास में. मैं अगर पूछा जाए सबसे बदमाश स्टूडेंट और तंग करने वाली स्टूडेंट कौन है तो मेरा नाम आएगा सबसे पहले. मे बी. बदमाश और वैसे नहीं. तुम चुलबुली हो अच्छी क्वालिटी के लिए. चुलबुली होना होना भी इस जमाने में बहुत कम लोग होते. Which is you are चुलबुली, But I'm not not chul. with everybody like this, you know. I know, I know. It won't It's be so. only between you and me, the chemistry which I share. That is from day one. The very first instance when I saw you and you saw me was like great looks we had. I can't forget that. I can't forget that. And I'm really honored, ma'am. Thank you so much for coming and spending I, your valuable time. I know it was a long pending due that I was asking you, please come. we were just postponing it, right? Because I know you were teaching, you were busy,
And I also felt that yes, now it's the time I should, pressurize you to come now. Finally, this is the Not, day when we not, meet. not like that. I also equally enjoyed. I enjoy your talking to you in the class also, and but the class is class, so we don't go Absolutely. beyond the limit कि क्या हमने बात Yes. करनी. But here you give me a lot of scope and freedom to talk about asking me different questions. Nice, and I'm really happy that we could make it. Absolutely, अच्छा we could लगा make मुझे it. बात करके. And you have interviewed lot of renowned artists and people in the Thank you. field, so it's a great thing. You also must be learning a lot, and you Absolutely. must be finding about people whom you are interacting, और कितना एक अच्छी उपलब्धि opportunity है to learn also, na, and to get inspiration. Very nice. Yes. And I wish you very best for your forthcoming projects and work. Thank you. You are Thank you, also ma'am. a very good dancer. Dance करती हो ये मुझे मालूम है. And you are an anchor. Uh, you have great stage presence. Good. आज And मेरे गुरु ने इतना बोल दिया मेरे लिए बहुत है. It's way beyond my imagination I could have had today. whatever you have, I'm telling, I'm making you aware. That is all. मैंने क्या कहा? You are that. So Yeah, keep one thing, all this while during this journey, I have learned a lesson from many dignitaries and personalities. Like, women should. Are you there, ma'am? I think there's some network issues going on. Are you there, ma'am? Knock, knock. Knock, 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 knock. I think I lost the connection, or the phone just got disconnected. Okay. Anyways, so thank you guys. Thank you for watching today's episode with me and being live all together with me. It was pleasure having all of you here. And of course, ma'am is an inspiration. And I'll see you once again for our next episode on What's Your Story shortly. And the next one is going to be really exciting one. Till that time, take care and be safe.